My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing a 2019 CAT DILR set. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. So this is the DILR set followed by 4 questions. So pause the video and try to solve it yourself first. So basically, the set is saying about the rainfall data. To compare the rainfall data, Indian Meteorological Department IMD calculated the long period average of rainfall during the period to June to August for each of the 16 states. The figure given below shows the actual rainfall measured in millimeters during June to August 2019 and the percentage deviation from LPA of respective states in 2018. And each state along with its actual rainfall is presented in the figure that is displayed here. So, okay? So on x-axis, on horizontal axis, we've been displayed actual rainfall data from June to August 2019 in mm, and on y-axis, vertical axis, we've been given deviation from LPA percentage, long period average percentage. और डेविएशन हमारा पॉजिटिव में होगा कुछ केसेस में और कुछ केसेस में नेगेटिव में है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक स्टेट का डेटा उठाएं, फॉर एग्जांपल फॉर राजस्थान. So for Rajasthan, actual rainfall is 300. The value is also mentioned here. So actual rainfall for Rajasthan is 300 mm. And that is for June to August 2019. But LPA से deviation कितना है राजस्थान का? That is of 15%. So plus 15% with sign. ठीक है? Plus 15%. So if LPA for Rajasthan, let us say that is equal to X. So in that case, 15% ज़्यादा है 300 mm. So X plus 15% of X, this is equal to 300 mm. That is what this implies. Accordingly, we can find out the value of X as well. Okay, questions पे चलते हैं. The first question, if a heavy monsoon state is defined as a state with actual rainfall in 2019 of 900 mm or more, then approximately what percent of the heavy monsoon state have a negative deviation from respective LPA in 2019? तो हमारा डेविएशन क्या कह रहा है? हैवी मानसून स्टेट कौन से होंगे जहाँ पे कि एक्चुअल रेनफॉल इज 900 mm और अबव, और एक्चुअल रेनफॉल हमें मेंशन ही है सारे केसेस में 900 एंड अबव. सो वी शुड ड्रॉ अ लाइन at 900, not actually but in mind as such. Okay, so these are the states which have rainfall more than 900, which are total 1 2 3 4 5 6 7, total 7 points are there. So 7 states are there which are having rainfall greater than 900 mm, yani ki these are heavy monsoon states. And question is saying how many of these heavy monsoon states have a negative deviation from respective LPA. Negative deviation aa raha hai hamara below this x-axis, so that is only for Arunachal, Kerala and Meghalaya. So out of 7, 3 states are there which have negative deviation. 3 by 7, which will be equal to 42.586%. Okay, what is 2.86%? Because 14.29% is 1 by 7. So option C answer aa jayega. Okay, next question. If a low monsoon state is defined as a state with actual rainfall in 2019 of 750 mm or less, then what is the median deviation from LPA as defined in the y-axis of the figure of low monsoon states? Low monsoon state is a state with having rainfall less than 750 mm. So we should draw a line at 750 mm. And all states which are pertaining to below this line are following are basically low monsoon states. और हमें चाहिए median deviation. Median कब पता चलेगा हमें? When we are arranging all the deviations in a increasing or decreasing order. तो ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं क्योंकि डेविएशन हमें एलपीए से दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी अरेंज्ड है. ठीक है. टोटल डेटा कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो देयर आर 5 स्टेट्स which are below 0%, यानी have negative deviation, and there are 4 states with positive deviation. हमें चाहिए मीडियन विल बी which will be exactly in the middle, जो वैल्यू आ जाएगा हमारा असम के लिए. असम के लिए क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है. ठीक है. -60%, -40%, -35%, -30% and -10%. तो median is basically for Assam and which is -10%. So answer will be option B. Okay. Next question. What is the average rainfall of all states that have actual rainfall of 600 mm or less in 2019 and have a negative deviation from LPA? Average rainfall for states which have actual rainfall of 600 mm or less in 2019 and have a negative deviation from LPA. अब इनका एवरेज क्या आएगा हमारा? तो लेस देन 600, लेस देन और इक्वल टू भी अवेलेबल है. तो कितने स्टेट्स हुए हमारे पास विच हैव नेगेटिव डेविएशन, यानी कि दीज 5 स्टेट्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट: असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली एंड मणिपुर. और एवरेज क्या आ जाएगा इनका 600
plus 600 plus 400 plus 300 plus 400, and this divided by 5. So that is 12 plus 11, 2300 by 5, which is 460 mm. So average rainfall for these states is 460 mm, which is option C. And last question for this set. The LP of a state for a year is defined as the average rainfall in the preceding 10 years, considering the period of June to August. For example, LPA in 2018 is the average rainfall during 2009 to 2018, and LPA in 2019 is the average rainfall during 2010 to 2019. यानी कि हमारा बेसिकली क्या हुआ, जब हम LPA in 2018 से LPA 2019 पे शिफ्ट हुए, so we basically replaced the data for 2009 with data for 2019. ये तो फर्क पड़ा, बाकी तो सारे ईयर्स का डेटा सेम ही है, बस 2009 को हमने स्वैप कर दिया 2019 से. And it is also observed that the actual rainfall in Gujarat in 2019 is 20% more than the rainfall in 2009. और हमें 2019 का डेटा तो पता ही है. क्वेश्चन पूछा एलपीए ऑफ गुजरात इन 2019 क्या होगा, और अभी जो हमें एलपीए गिवन है, दिस इज फॉर एलपीए ऑफ रेनफॉल, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 16 स्टेट्स. तो ये हमें दिया है एलपीए फॉर 2018 गिवन है ऑलरेडी, और अब हमें एलपीए ऑफ 2019 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलपीए ऑफ गुजरात इन 2019 का वैल्यू क्या होगा. तो 2018 का एलपीए क्या होगा, डेविएशन हमें दिया हुआ है. गुजरात का डेविएशन कितना है, 25% प्लस 25%. So if LPA in 2018, if that is equal to x, so 1.25x, because 25% deviation, this is equal to the actual rainfall in 2019, which is equal to 600. तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 480. एलपीए अगर 4 यूनिट्स होगा तो 5 यूनिट्स हमारा एक्चुअल है, और 5 यूनिट्स की वैल्यू है 600, तो 4 यूनिट्स विल बी 480, यानी कि हमारा एलपीए फॉर 2018 इज 480. क्वेश्चन पूछा 2019 का एलपीए क्या होगा, जबकि ऑलरेडी मेंशन है हमें 2019 इज 20% मोर, एक्चुअल रेनफॉल इन 2019 इज 20% मोर देन इन 2009. तो इफ दिस इज 600, एक्चुअल रेनफॉल इन 2019 दैट इज 600, 2009 का रेनफॉल क्या आ जाएगा, 20% ज्यादा है, 20% यानी कि 1/5 ज्यादा है, तो 5 से 1 ज्यादा है, तो 5 यूनिट्स इज द रेनफॉल in 2009, then 2019 the rainfall will be 6 units, which is equal to 600, so 5 units will be equal to 500. देखिए actual rainfall in 2009 was equal to 500, actual rainfall in 2019 is equal to 600. ठीक है, सो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज, क्योंकि हम रिप्लेस करें 2009 का डेटा 2019 से, सो उसकी वजह से इंक्रीज होगा ऑफ 100 यूनिट्स. भाई 500 का डेटा को हम रिप्लेस करें 600 से, तो 100 का इंक्रीज आ रहा है किस पे, सम पे चेंज आ रहा है 100 का. सो डेल्टा ए या चेंज इन एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एस बाई नंबर ऑफ ईयर्स. तो डेल्टा एस हमारा 100 है, तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, दिस विल बी 100 बाई 10, और सम पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, प्लस 100 बाई 10 यानी कि प्लस 10 हो जाएगा. तो एवरेज हमारा डेल्टा ए चेंज इन एवरेज विल बी प्लस 10, तो 10 से इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑलरेडी हमारे पास 480 था, तो दिस विल बी नाउ 490, 480 प्लस 10 विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी 490. क्लियर है बात, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 490. दिस वाज अ सिंपल सेट, बस हमें एक बार समझना था कि डेटा हमारा कैसे दिया हुआ है, किस तरह से गिवन है, और अकॉर्डिंगली इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आया होगा. आई होप कि सेट तुमने अपने एंड पे भी इजीली सॉल्व कर लिया होगा. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग. और सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और साथ में बाकी जो सेशन है डीआरआर पे प्रीवियस क्वेश्चन के, और जो डीआरआर 100 सीरीज हम कर रहे हैं उसके सेशन को भी चेकआउट कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.